आपका अपना पसंदीदा अलंसार टी शॉप अब पीली दरगाह मस्जिद उस्मानी गनी के सामने। हम लोग टीचर्स है ब्राइटन स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के ईदी बाज़ार के पास ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के टीचर्स है। एक्चुअली हम लोग स्कूल में पंक्चुअली जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे नहीं जा रहे बोल के हम लोग को सडन ऑफ नोटिस दे दिए, बिना इन्फॉर्म करे के नोटिस दिए। और अब हम लोग जाके सैलरी पूछे तो हम लोग को सैलरी नहीं दे रहे और हम लोग का पीएफ भी है, पीएफ भी नहीं दे रहे। वजह क्या है हम लोग को नहीं मालूम। अब Ma'am, there is recently video getting viral on social media saying that you have terminated few of your staff teachers and you have not paid salaries. Can you please explain about? Yes, sure. I've gone through that video. To my dismay, this video is so disturbing. We at Brighton Group of Schools, we ensure that we develop every child beautifully, holistically, so that every child develops as an individual. And to develop children, to develop students, good team of teachers is the backbone. If teachers give their commitment and work towards the development of children, then only a child can develop nicely. So here, when we talk about these two teachers, they were appointed in the month of November, and from November to the month of February, Miss Mariam has worked, which counts up to total November 22. 2022. Yeah, November 22 to February 23, it counts up to 4 months hardly. And Miss Tabassum also joined in the month of November itself, and November to mid of March she has worked, which counts up to 4.5 months. And in these 4 months they have been very, especially Miss Tabassum has been very irregular, very unpunctual, and her work attitude and work ethics has been extremely unacceptable to any organization. Although because of their work attitude, their absence, their late comings, I have cooperated with them to my best, and I also even paid them even if they were late. I have paid them, and I cooperated them in the best possible way by counseling them, by motivating them every now and then. And when my words fell on their deaf ears, I've given them verbal notices and intimations to not to behave such recklessly towards their work, and show some honesty and focus on the students development. But to my dismay, they were not at all ready to listen to the instructions of the management or my own instructions. So it was eventually I was forced to terminate them. And Ma'am, coming there is another allegation also that you have not paid the salary. So I want to know what is the pending salaries of them, and can you please tell me the date when you will pay and the month scale of salary, how is calculated? Right, sure. We pay the salary for one complete month on the 10th of next month, on the 10th of every next month. For the month of, suppose for the month of February, we pay on 10th of March. For the month of March, we pay on 10th of April. Completely we pay them. So for Miss Tabassum, the whole salary till the month of February has been cleared, has been paid on 10th of March, and we have their signatures in our salary register as well. Whereas for Miss Mariam, since she worked only till February, and from the 1st of March, she hasn't shown up at all to the work abruptly, without any intimation, without any notice to the school. She stopped coming to the school for whatsoever reasons it may be. But you must have some basic work ethics, basic sense of responsibility towards your work, towards your organization. I have informed her whatever it may be the reason. Take 1 week's leave. I have proof of my messages with me. Take 1 week's leave, or else I will reduce the timings for you. At least come down till I hire your replacement. But she was not ready for that, and she abruptly stopped coming. And on the 10th of March, when salary was issued, she was not present. So her February salary is due, which counts up to 5,806 rupees for Miss Mariam, and for Miss Tabassum for 15 working days approximately.
in the month of March, 3,200 rupees is due towards Miss Tabassum. And how come Miss Tabassum is expecting a salary for the month of March? In the month of March itself, I don't think that any organization anywhere in the world pay the salaries. Maybe if it is a fortnight pay or a weekly pay, they may pay weekly or fortnightly. But when it is a monthly pay, unless the month is finished, no organization will pay you. Then how come Ms. Tabassum is expecting her March salary before March is finished? The salary she was claiming that to be paid on April 10th. Yes, it has to be paid on April 10th. And Alhamdulillah, since the school has been established since 7 years, and we have been paying, Alhamdulillah, to each and every staff without any delays or without any issues to anybody. I even help people by giving them advances, or if they need any medical aid or any sort of help, I try my best to cooperate with all my staff, ensuring that yes, because they are working for our organization for the betterment of students. If I motivate them, if I cooperate with them, if I help them, in return they will give their 100%. That is what I expect from them, and any management or organization will expect the same from their employees. That is what my expectation was from them. But unfortunately, forget about working honestly or having full-fledged work ethics or being regular or punctual to the school. They have been extremely irregular, unpunctual. They were Miss Mariam abruptly quit the job, and the behavior of Miss Tabassum in the school premises with other teachers and her slang, all that, I feel very sad that why I even tolerated them for 4 months. I should have actually terminated them the very first month, after the very first month. Still I thought that yes, if other person is wrong, I should not do wrong with them. I should give them enough time, I should give them enough notices or enough intimations or train them. I'm sitting here to bring a change in the society. I cannot fire and hire somebody randomly. So I have been very patient with them for 4 months. Even after that, if they are doing all this rumors, spreading all these rumors and all that, unfortunately no one can help them in this way. Ma'am, you're saying that you're paying salary on time and everything. तो ऐसा वो लेडीज को क्या होगा कि मीडिया की जरूरत लेनी पड़ी और मीडिया में आना पड़ा, तो ऐसा क्यों करे वो लोग? राइट जैसे कि मैंने कहा कि हमने उनको हर साल रिक्रूटमेंट्स होते हैं, हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं अलग अलग स्टाफ मेंबर्स के. जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो मेरे पास भी एक्सरे तो है नहीं कि मैं उनका दिल झांक के देख सकूं या फिर उनका कैरेक्टर जज कर सकूं. अपॉइंटमेंट होता है उनका क्वालिफिकेशन बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे. इसी तरीके से हमने भी उनका अपॉइंटमेंट किया है. जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि उनका जिस तरीके से रवैया था स्कूल की तरफ, उनकी जॉब की तरफ, जिस तरीके से वो केयरलेस थे, जिस तरीके से वो उनका स्कूल को आना या फिर दूसरे टीचर्स के साथ बदतमीज़ी करना, वो सारा था. तो मुझे नहीं लगता कि एक टीचर को ऐसा होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि हम सैलरी देने के बाद भी वो हम नहीं दें करके बोल रहे हैं. मैंने आपको अभी अभी एक क्लियर फिगर बताया है कि तबस्सुम टीचर का 3000 चेंज ड्यू है एंड मरियम टीचर का 5000 चेंज ड्यू है. राइट. तो मुझे नहीं लगता कि ये पीनट्स, इट्स लाइक पीनट्स अमाउंट्स नाउअडेज. आजकल के ज़माने में ये अमाउंट की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है. एवरी पेनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हर रुपया इम्पॉर्टेंट है मेहनत करने वाले के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए. लेकिन इतने छोटे से अमाउंट के लिए मीडिया में जाना, इतना बड़ा हंगामा करना, डीओ ऑफिस तक जाना, पता नहीं और क्या क्या वो कर रहे हैं. तो इतने छोटे से अमाउंट को वसूलने के लिए वो लोग इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट बहुत सारे मीडिया चैनल पर लगा रहे हैं, मीडिया चैनल्स को बुलाने में. क्योंकि कल से स्कूल पर काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, ये सारी हरकतें हो रही हैं. तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़े से अमाउंट के लिए उन्होंने ये किया है. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई गेस कि या तो उनको मीडिया में आने का बहुत ख्वाहिश था, उनको इंटरेस्ट था कि दे वांटेड टू बिकम मीडिया क्वींस. आजकल क्रेज़ है ना लोगों में मीडिया क्वीन बनने का, मीडिया किंग बनने का. तो शायद मोस्ट प्रोबेबली उनको मीडिया क्वीन बनने का बहुत इरादा था, इंटेंशन था, जिस वजह से वो ये कर रहे हैं. हालांकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से या फिर पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी मिली होगी काम करने की और उनके फैमिली सपोर्ट रहा होगा, तभी तो वो लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन
वो लोग इस सपोर्ट की वजह से और ऑर्गेनाइजेशंस की अपॉर्चुनिटी देने के बावजूद अगर वो चाहते हैं तो अपने करियर में, अपने एजुकेशन करियर में वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते थे, एक नाम कमा के अपने आप को मीडिया पे ला सकते थे। उसके बावजूद, उसके बदले उन्होंने क्या किया, ये सारी हरकतें कर कर मीडिया क्वीन बनने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं नाहक में। एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्यू टिपिकल विमेन, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी के बहुत सारे दूसरे वुमेन ट्रस्ट इशू सफ़र करते हैं। दे ऑल्सो सफ़र some domestic problems between husband and wife because of this kind of women, the impression they lead, जिस तरीके का impression ये दे रहे हैं, इस वजह से दूसरे वर्किंग वुमेन को बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं और इसी वजह से हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के औरतें आगे बढ़ के बराबर काम नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली एंड फियरलेसली। इसके अलावा मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि बेसिकली मैं ये गेस कर रही हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट 3000-5000 के लिए कोई ये काम नहीं करेगा। आई वुड लाइक टू रिकॉल द इंसिडेंट और the crime that has happened in this premises on 29th January 2023। आज से 2 महीने पहले 29 जनवरी को यहाँ पर हमारे स्कूल पर कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग पर, इस प्रेमाइसेस पर इलीगली कब्जा करने की कोशिश की थी और पूरा प्रेमाइसेस तोड़ा था एंड काफ़ी सारा हंगामा मचाया था। दे हैव इवन कम अप विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड लैंड ग्रैबर्स केम अराउंड और उसका न्यूज़ भी आपके चैनल पर आया था, राइट। तो उस सिलसिले में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इन लोगों ने उनसे कल्यूट कर कर उनसे ये सारा काम करवाया है चंद रुपयों के लिए। तो मुझे अफसोस है ऐसे टीचर्स पर कि ये टीचिंग प्रोफेशन के नाम पर ऐसे टीचर्स एक धब्बा हैं, किसी के लिए मोटिवेशन का ज़रिया नहीं बन सकते ये लोग। और रही बात जो हमारे साथ 29 जनवरी 2023 को जो उन्होंने क्राइम किया था उसका हमने FIR करवाया है। FIR नंबर 13 ऑफ 2023 मादन्नापेट PS में लॉन्च हुआ है और सेम उसी केस से फिर कनेक्टेड एक और एक FIR लॉन्च हुआ है, FIR नंबर 36 ऑफ 2023 जो लॉन्च हुआ है मलकपेट PS में, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। एनी हाउ, ये हैरेसमेंट हमको डिस्पोज करने का, हमको इस प्रॉपर्टी से हटाने का पिछले सितंबर 2023 से चल रहा, 2022 से चल रहा है, जिस वजह से बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी एज वेल एज टू सेफगार्ड द स्कूल एंड द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, एनलाइट एजुकेशन सोसाइटी, our education society has filed a case in civil court and alhamdulillah we have also got this injunction order of what I'm sharing with you here. We have got this injunction order from the court which will definitely protect us and safeguard us from all these people. All these tricks and gimmicks are the cheap tactics of the opposition party who is trying to defame us and trying to torture and harass us continuously. Since they are not capable of fighting the cases legally in the court, they are trying to adopt all these local tricks, cheap tricks, and they are trying to defame myself and my organization. But I would like to clearly, very explicitly, I would like to state to everyone, whatever approach they can take, they may. Whatever action they want to take, legal, illegal, or whatever approach they want, they can. We are ready to fight this situation, this battle with full force and enthusiasm and courage legally. And I'm very confident on our Indian legal judicial system that as we have won the battle earlier, we will definitely win the battle. I will not step back at all and I will ensure that I will fight, we will fight till we win. We are not going to step back at all in this. Now I'd like to conclude by saying that we will ensure that this school, this educational organization will function successfully for next decades together. कई सालों तक इंशाल्लाह ताला हम इसको सक्सेसफुली चलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 7 साल से चलता आ रहा है। इसके लिए मैं तमाम पेरेंट्स से, DO से और तमाम लोगों से फिर से एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ और उन सब का कोऑपरेशन का रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड आई
ensure that my parents that please do not worry, this organization will successfully fully fledged run till your children successfully complete their education with us in their far futures, inshallah. Jazakallah khair wa izzu mantasha wa tazillu mantasha. Assalamu alaikum. I'm working in the Brighton International School. My name is Nisha Tunisa. Since 6 years, I worked as a teacher. Then last year, I got a promotion as an in charge in the kindergarten. And I have been working just because the school manager is always cooperative. They always cooperate with us. If we come late, we inform them. Everything, like, we have all the cooperation from the management side. And there is a video going viral on social media that the management is not paying the salaries. No, every 10th of every month I am getting salary every The month. teachers who made allegations over the school, is they are regular to the school? No, they are not at all regular. After I called, they used to come to the school. I used to call, madam, are you coming? Like, I used to call. It is not my duty. Still, I'm doing that. In a month, how many days they take a leave or absent? Oh, I cannot count it even. Like 3, 4, at least one is the CL we are having. More than one, like 10, 15. They're impunctual or irregular. Out of 5 months, she has attended nearly 2 months if we consider all the days. Hardly 60 days she attended. यहाँ पे तेलुगु हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। समझिए, मैं शाहीन नगर से यहाँ तक आती जर्नी करके। मैं यहाँ पे 5 इयर्स से काम कर रही हूँ। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत रिस्पेक्ट करते मेरी। इस वजह से मैं ये स्कूल को छोड़ के जाना दिल नहीं बोलता मेरे को। कई बार सोचते लेकिन दिल नहीं बोलता, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सैलरी भी टाइम पे मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीचर्स जो है सो थोड़ा सा टीचर्स का कहना था कि वो सैलरी उनको नहीं मिली, और टीचर्स का बिहेवियर कैसा था? क्या वो रेगुलर थे, क्या थे? इरेगुलर थे और टाइम से भी नहीं आते थे। डेली वो लोगों को कॉल करना पड़ता था। कितने टाइम पहले वो लोग ज्वाइन करे थे यहाँ पे? 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स। Only 4 कितने दिन months. आए होंगे? 4 मंथ्स में देखिए, 1 मंथ में वो लोग ओनली 15-16 डेज प्रेजेंट हुए तो बहुत हुआ। बाकी दिन नहीं आते? नहीं आते थे। वीकली 2-3 डेज तो लीव लेते ही थे वो लोग। सैलरी का आप 5 साल से यहाँ कर रहे हैं, सैलरी आपको टाइम पे मिल रही है? कैसा मिल रही है आपको? कौन सा, कितने दिन के बाद आपको सैलरी मिलती है वर्क करने के बाद? सैलरी देखिए, हर स्कूल में 10 को मिलती है। यहाँ पे भी 10 को प्रॉपर उसी टाइम पे मिलती। मंथ अभी कंप्लीट। तक 5 सालों में कभी आपको लेट सैलरी मिली या फिर? जी नहीं, लेट पेमेंट नहीं हुआ। एडवांस पूछा भी तो एडवांस भी मिल गया हम लोगों को। कभी जल्दी होना है सैलरी तो सैलरी भी जल्दी मिल जाती है। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है। मैं यहाँ की आया माँ हूँ, ब्राइटन स्कूल में, ईदी बाज़ार पे। और मेरे को कुछ भी नहीं है। मैडम सर हमारे अच्छे हैं और हमेशा हमारे को दे देते सैलरी। 10 तारीख को 10 तारीख दे देते और हर चीज़ हमारे को करते, मदद करते रहते हैं। माँ कहीं कुछ बना लेके किसी का भी अच्छा देखते। सर भी अच्छे हैं। बुढ़े होकर जियो, दोनों सदा सुहागन रहो। मेरी दुआ उन लोगों के साथ है। 7 साल से हूँ मैं। कभी हमारे को नहीं दिया और देन लेन लेते। कभी हमको परेशानी आई तो सर देते, मैडम से पूछो, दे देते हमारे को। ऐसा नहीं हमारे पास